Hello everyone. Today we are going to start with the weather app. Fine. So we are going to make an app which is going to show the weather of a particular city or a country. So that would be an HTML, CSS, and JavaScript project. So whenever we are doing a HTML, CSS, or an JavaScript project, we need to have a folder first. So let us create one folder. So what I'll be doing, I'll be going in my D drive. The location of a folder could be anywhere, wherever you want. You can keep the location of folder. I am putting it in my D drive. So I'll go in my D drive, right click, new folder. I'm going to name this as a weather app. Fine. Now what I'll be doing, I'll be opening a Visual Studio Code, which is our code editor. Open a Visual Studio Code. Whenever you open a Visual Studio Code, you have to make sure whatever is you on your screen, it could be some set of the code which has done by you in a previous class or in the previous work when you have opened it previously, or it could be an empty page. You have to go in File, Open Folder, and need to open your folder once again. So I'll go in New Volume D, Weather App, select the folder. Done. Now you have to make two files. You have to be cautious over there. Huh? There is something called as new folder as well over here. So you don't need to click that. You have to click on new file. Okay. So it is over here. Just keep your cursor over here. You'll be understanding. It is going to write the name over there. That is, it is a new file. So just keep it over here. My first file would be index.html. Fine. Then I will be needing one more file, style.css. index.html में क्या होगा आपकी वेबसाइट का लेआउट बनेगा स्टाइल वुड बी यूज फॉर द स्टाइलिंग पर्पस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ओके नाउ लेट अस गो टू index.html and let us have the layout. Okay, so whenever we go in index.html we need to have all the set of code which will be helping us to write all the tags, any code in a efficient manner. So let us have our boilerplate. For bringing the boilerplate, what you can do, you can type in the index.html html, and from the given three option you will need to select html file. Okay, समझाइए. Click on html file. Now my file is ready. Now what I can do, I can change the title. Right now the title is document. ये टाइटल का नाम चेंज कर देता हूँ मैं वेदर ऐप. ओके, ये नाम कहाँ आता है? इट विल नॉट बी ऑन योर वेबसाइट बट इट विल बी द टाइटल ऑफ द ब्राउजर. कैसे दिखेगा? आई विल जस्ट शो यू. राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर. ओपन विथ लाइव सर्वर इज एन एक्सटेंशन. अगर आपको ये एक्सटेंशन नहीं है आपके पास, व्हाट यू कैन डू, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्सटेंशन. यू कैन क्लिक ऑन द एक्सटेंशन एंड सर्च फॉर लाइव एंड यू कैन गो फॉर अ लाइव सर्वर और उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. राइट नाउ इट इज इंस्टॉल एट माय एंड, सो इट्स टेलिंग इज अनइंस्टॉल. ठीक है, आपके इसमें वो अनइंस्टॉल आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा. यू नीड टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल ऑप्शन. ठीक है, आई विल जस्ट क्लोज दिस बिकॉज ऑलरेडी आई एम हैविंग दिस. और एल्स व्हाट विल द अदर मेथड, need to go to a particular folder which you have created, go in there and click on your index.html file. तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हो. Now if you remember class, हमने नाम क्या दिया टाइटल? वेदर ऐप. तो ये जो वेदर ऐप है उसका नाम कहाँ आ रहा है? इज इट ऑन दिस वाइट एरिया? नो, इट इज ऑन द टॉप. तो ये आपका टाइटल डिसाइड करते हैं. तो टाइटल इज ओवर हियर. जैसे फॉर एग्जांपल इसका टाइटल क्या है? न्यू टैब. इसका टाइटल क्या है? वेदर ऐप. अंडरस्टूड? ओके, नाउ I'll just click on the Explorer part. I'm having one more file along with me. Which file is that? Style.css. अब ये style.css को मुझे ये index.html के साथ लिंक करनी है. So how can I do that? Very simple. I will go after a title. वहां पर मैं टाइप करता हूँ link. Then I'm going to press tab. href के अंदर आप उसको लिंक कर दो. कैसे लिंक करोगे? href में आपको फाइल का नाम डालना है. What is the name of the file? Style.css. Understood this much? Okay. Abhi, let us make one background division class. How to make a division class? आपको div करना है, then go for a tab button. तो आपका पहला division आ गया. ये division को एक नाम देना है. Okay, so how we are going to name that? We are going to make one class. तो यहाँ पर आपने enter किया, class mention किया. What should be the class name? Main. Okay. This main name is given by us. It was not defined in the tag. जैसे ये दिख रहा है, ये body tag,
head tag. It's all the name which are default HTML code. But this main has been given by us. So ये नाम हम लोग दे रहे हैं. So it could be different. आपके main के बदले you can write the anything. If whatever you want, you can give a name accordingly. अभी main class के अंदर we are going to put everything, the complete layout. But ये main class का size क्या होगा? How it is going to look? ये वाला part आपका किस में जाएगा? Style.css में. So let us go in style.css. Now this is the main class which was created by us. तो मेन क्लास हमने बनाया था. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट डॉट main मेन. ये तरीका है लिखने है. जब व्हेनेवर वी राइट एनी क्लास ना, आपको पहले डेसिमल डालना है और उसका नाम एज इट इज, अगर वो स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल्स में तो कैपिटल में. ओके, देन वी विल बी हैविंग कर्ली ब्रैकेट एंड इनसाइड दैट वी आर गोइंग टू पुट अ वैल्यू ऑफ दिस. ओके, तो मेन को मैं क्या करता हूँ, हैव अ लुक. आई विल नॉट डू लॉट ऑफ थिंग. मैं बस की हाइट बढ़ा देता हूँ. हाइट, ओके, could be 100 VH. Fine. So my height is 100 VH. ये हो गया. And let us have a background. I did not download any image. I'll just go to Google and download one image. So let me search for some good image. It could be any image. Huh? Cloud. See, I'll just mention properly. Cloud image. So I'll go for one of the images. क्या कर सकते हो आप इसको सेव कर लो अपने एंड पे. कभी भी आप उसको ऐसे सेव मत किया करो, सेव इमेजेस, देन यू विल गेट अ वेरी लेंथी लिंक. मालूम है, कभी कभी आधा पूरा पेज भर जाता है, आधा विजुअल स्टूडियो का भर जाता है. देन यू सेव इट. Always click on the image first, open that image, then right click, save images. And while you're doing save images, just make sure it is JPG or PNG. It should not be what? WEBP file. Okay, इसका नाम भी बहुत बड़ा है. I will just make it name small. So I'm going to just write the name as a cloud. ये ऑप्शनल है आपके लिए, आप चाहिए तो ऐसा करो या तो वही नाम के साथ जाओ. ओके, एंड आई विल गो टू सेव दिस इन अ पर्टिकुलर फोल्डर. मैंने किसमें सेव किया था, से इन द डाउनलोड वॉल्यूम डी. लेट मी जस्ट चेक. हाँ, इन द वेदर ऐप. सो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इट ओवर हियर. तो मैंने वेदर ऐप के फोल्डर के अंदर आई विल बी सेविंग दिस. क्लियर विद दिस पार्ट. अभी आप अगर यहाँ देखते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी आर हैविंग index.html, style.css भी है, एंड यू आर हैविंग व्हाट, क्लाउड इमेज एज वेल, है ना, क्योंकि मैंने वो फोल्डर में सेव किया. ओके, नाउ लेट अस गो टू द स्टाइल. मुझे एक बैकग्राउंड में इमेज चाहिए था. सो फॉर दैट प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू मेंशन बैकग्राउंड इमेज. उसके बाद आप क्या डालोगे, URL. सिलेक्ट दिस. इन दैट URL यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ इमेज. जैसे मैं C दबा देता हूँ, एज सून एज आई प्रेस C, क्लाउड आ गया. ओके, नाउ लेट अस चेक इन आवर ऐप. कहाँ पर मेरा वेदर ऐप? कैन यू सी द इमेज? यस, इट इज रिपीटिंग ना. तो इसके रिपीट नहीं होने के लिए वी कैन हैव सम कोड. ओके, so right now what I'll be doing, अगर बाय चांस आप ऐसे कोई इमेज में स्टक करते हो, तो what you can do, you can always refer to Google will always give a proper answer. जैसे for example, I'll just mention background image cover full, something like that. Okay, so let me go and check in W3 scroll property what it is saying me. So there are two ways over here. Background URL डाल दिया आपने, background repeat, no repeat, background size auto. So let us try this. So what I'll be doing, I'll just copying this code from here. Okay, over here, Control V. Let us see, is it giving us some changes to our image? Okay, some changes although have happened, but it's not as per mine. So background size auto के बदले, if I do that background size cover, let me try. Now if I check this, oh wow, now the background size has been covered. I hope you understood this thing. Fine. अभी नेक्स्ट थिंग, अब मेरे ऐप में मुझे एक और चीज चाहिए.
ओके, द थिंग इज दैट मुझे एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर मेरे ऐप के अंदर आई वुड हैव वन फॉर्म वेयर द पीपल आर गोइंग टाइप द नेम ऑफ द सिटी। तो ये मुझे इनपुट बॉक्स बनाना है। सो हाउ कैन आई मेक दैट इनपुट बॉक्स? सो आई एम गोइंग टू मेक वन मोर डिवीजन, div tab। अब ये जो डिवीजन का नाम भी मुझे देना है, आई जस्ट मेंशन अ क्लास टैब। क्लासेस का नाम देता हूं मैं यूजर इनपुट। ओके, क्या नाम दे दूं मैं? यूजर इनपुट। लेट अस कीप इट सिंपल ओनली, यूजर इनपुट। डन। अब ये क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू मेक वन फॉर्म। so instead of form I'll just write input। ओके, टैब। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो एक इनपुट, जैसे मैं इनपुट डाला, व्हाट डज दिस इनपुट डू? इट मेक्स वन फॉर्म, इट मेक्स वन इनपुट बॉक्स फॉर यू। सो लेट अस गो एंड चेक। लेट मी रीलोड दिस। आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉर्नर में, यू कैन सी a small input box। ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसे। अभी what we need, this input box should have a information like, अब इसमें क्या टाइप करना है? If someone see a box, he might type anything else over there। मुझे उसको गाइड करना पड़ेगा ना भाई, आपको इसके अंदर सिटी नेम या कंट्री नेम टाइप करना है। ओके, सो फॉर गाइडिंग देम, ओके, यू माइट हैव सीन सम बॉक्स इट इज शोइंग एज a highlight, क्या कि आपको एंटर email, enter this thing। so that are called as placeholder। so I will put a placeholder। तो जैसे मैं प्लीज दबाता हूँ, आई एम गेटिंग अ प्लेस होल्डर एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू गाइड यू, एंटर ए सिटी नेम। ओके, एंटर ए सिटी नेम कर दिया मैंने। तो अभी यहाँ पर इफ जस्ट रीलोड दिस, कैन यू सी ओवर हियर, क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? अभी एंटर अ सिटी नेम, गॉट इट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेस होल्डर, जस्ट गाइड। अगर मैं उस पर कुछ टाइप करूंगा देन इट विल गो अवे, बट if I don't type anything, it is going to just guide me that we have to type enter a city name over here। Okay, now the next thing, इसको एक आईडी डिफाइन करते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी चीज आएगी उसके लिए एक आईडी है। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर रूम, ही वुड बी हैविंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी 7th डी की क्लास में बैठ रहा है, तो क्लास का आईडी क्या है? 7th डी। whoever is sitting in that, we are going to tell that that person is sitting in which class? 7D। so if some Ramesh is sitting, Suresh is sitting, किरण इज सिटिंग, सो वी कैन टेल दैट किरण इज सिटिंग वेयर? इन 7D। तो उसी तरह से वो बॉक्स के अंदर जो भी बैठ रहा है, वो बॉक्स के एक आईडी बना रहे हैं हम लोग। सो दैट लेट अस गिव आईडी। तो आईडी में दे देता हूँ इसका सिटी नेम, आई जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, सिटी नेम। ओके, सो ऑल दिस नेम आर गिवन बाय अस। अच्छा, अभी यहाँ पर लेट अस हैव अ बटन। तो बटन से क्या होगा? अभी यहाँ पर किसने तो एंटर कर दिया, यहाँ पर तो नाम डाल दे, बट डायरेक्टली तो नहीं आएगा ना, कुछ तो ऑपरेशन करेंगे तो हमको टेम्परेचर दिखेगा अबाउट पर्टिकुलर सिटीज। so for that we'll be having one button and we are going to mention that when we click on that button, then we need to get a temperature, something like that। got it? so for that what I'll be doing, I'm going to put a button। मैंने एक बटन ले लिया, बटन का नाम एक दे देता हूँ सर्च। got this? so let us have a look, let me reload this page। now you can see I'm having one box input and I'm having one button। बटन का नाम क्या है? सर्च। लेकिन बटन का फंक्शन कैसे होने वाला है? ओके, इट वुड बी समथिंग लाइक ऑन क्लिक, है ना? तो बटन जैसा वो ऑन क्लिक पे होगा, ऐसा नॉर्मल बटन पे नहीं होगा। जैसे टाइप करें तो आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जनरली बटन गेट क्लिक। सो वी आर गोइंग टू मेंशन ऑन क्लिक। अभी ऑन क्लिक के ये आगे क्या आएगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो मैं बाद में बताता हूँ। ओके, नाउ लेट मी मेक वन मोर डिवीजन। अभी क्या होने वाला है, इफ आई एम डूइंग समथिंग ओवर हियर, आई वुड बी गेटिंग सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दैट, है ना? तो पहले थोड़ा हम लोग डेकोरेशन पार्ट पे जाते हैं, देन विल गो फॉर द अदर थिंग। तो इसका इनपुट बटन का डेकोरेशन करते हैं। ओके, so whenever I'm telling about decoration, in which part you are going? In the style.css section। Fine, let us go there। I'm having this user input or input type text। Okay, so what I will be doing,
style.css में जाता हूँ. I'll go for a user input. User input is the name given by us. So dot user input. Then you should know what do we need? A curly bracket. Inside the curly bracket, let us mention some width. Width ले लेता हूँ मैं इसका 70%. Okay, I'm just putting 70%. Let me check. हर एक कोड डाल के आप चेक कर लिया करो. Is it affecting this in any way? Okay, it's not happening anything. So let me see what it's doing right now. Width 70%. Padding top. Padding top. Let me put it 40 pixel and check. तो जनरली पैडिंग पता है ना आप लोग क्या होता है. अगर नहीं पता आई विल जस्ट शो इन द गूगल एज वेल. पैडिंग इन CSS. So padding is used to create space around the element content inside of any defined border. तो जैसे ये समझो ये मेरा एलिमेंट है तो इसके ऊपर नीचे ये साइड वो साइड जो साइज है दैट इज द पैडिंग. तो ये जो दिख रहा है आपको द स्पेस दैट स्पेस इज कॉल्ड एज पैडिंग. तो हम लोग उसको समझ सकते हैं इंटरनल साइज. ओके फाइन. तो अभी मैं जाता हूँ पैडिंग 40 पिक्सल. लेट मी जस्ट चेक डज इट गिव एनी इफेक्ट टू माय वाई. फाइन. तो जो इनपुट बॉक्स था अंडरस्टूड व्हाट इज दिस इनपुट बॉक्स. अच्छा यहाँ पर इनपुट बॉक्स है क्या फिर वो समझो तुम लोग. नहीं तो समझो इनपुट बॉक्स कुछ अलग है. इनपुट पार्ट इज द होल थिंग. इट इज इंक्लूडिंग द टेक्स्ट बटन एज वेल एज दिस थिंग. तो यहाँ पर अगर मैंने इनपुट का डाला मतलब प्लेस होल्डर का साइज बड़ा नहीं किया मतलब ये इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा. फाइन दैट 70% एंड द 40% पैडिंग मैंने पैडिंग टॉप पे डाल दिया. एंड आई पुट सम मोर वैल्यूज लाइक text align center. Text align center. Okay, तो उसमें जो टेक्स्ट आएगा लेट अस ट्राई दैट. एंड द margin around try to put it auto. Let us see margin auto. Okay, so it has taken an auto margin. This automatically margin ले चुका है from here top as well as. Fine, padding top तो डाला था मैंने इसलिए इसका ये लिया and he has taken this same size. Okay, that's look good to me. Now अभी let us concentrate on this part now. जो input text है अंदर जो input text आएगा उसके लिए. So what I can do for the CSS part उसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा. Input is a HTML command. तो इसको डॉट की जरूरत नहीं है. इनपुट स्क्वायर आपका मेंशन करना पड़ेगा आप किसके लिए बता रहे हो. टाइप व्हाट इज द टाइप टेक्स्ट. okay, type equal to text. Then we are going to mention the curly bracket for this thing. So this thing is right now for the box. यहाँ पर width. Let us check if I change the width over here and make it 60%. Is it going to affect the size? Got it? The size is being affected. Similarly, अगर ये मैं width को हटा दूँ, I didn't find any sense while putting this width. So will it affect the size? Is going to happen something else over here? So now you're getting more of this. अच्छा. So now you got the idea. Previously जब मैंने user input 70% डाला था, okay, so it was taking a 60% of that 70%. मतलब उसके लिए 70% complete चीज थी. There was a whole world for that user input. And out of that it was 60%. लेकिन जब मैंने width 60% किया इसकी कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, so it is going to take the whole size. तो ये पूरे साइज को कंसिडर करके is going to take a 60%. ठीक है, तो इतना दिमाग नहीं लगाते, but understand that अभी ये जो width है that is a 60% for this, for the whole size. And what else we can do? Let us go for the padding as well. Padding. अगर मैंने सिर्फ पैडिंग लिखा तो इट इज गोइंग टू टेक रैंडमली फ्रॉम ईच ऑफ द डायरेक्शन. मैं 20% डाल के देखता हूँ. ओके, यू कैन चेंज द वैल्यू. इट इज अ स्टाइलिंग थिंग, सो दैट कैन बी डन बाय यू.
That's too much padding. I'll just go for a pixel, 20 pixel. Let me go over here and check. 20 pixels. This is too much, but still I'll go with it. Fine. Now let us do the same property, the button. So we are having something. अच्छा इसका color वर्ड change करना है. You can do that. I'm not doing that. I'm just concentrating right now on the technical part. Fine. So we are having a button as well. Button is a defined element of the HTML. तो यहाँ पर हमको वो चीजें नहीं करनी है. क्या डॉट नहीं डालना है. जो क्लास हम बनाते हैं उसी में हम लोग को डॉट डालना है और जो रेडीमेड एलिमेंट HTML के होते हैं उसमें डॉट नहीं डालना है. So let us give me padding. So it could be the padding, same thing 20 pixel. Let us see how it will be looking comparatively. अभी बटन ऐसा है. If I do this, okay. अब इसका आप लोग बॉर्डर रेडियस कलर ऑल दैट कैन बी चेंज है. तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई. इफ यू वांट टू चेंज द कलर, you need to use a color property for the text. If you want to change the background color, you need to use the background color. Okay. So I'm just trying to make it fast. ये बटन हो गया मेरा. Now class, let us go back to index.html. अभी हम लोग ने क्या डिफाइन किया, क्या कि एक क्लास है जिसके अंदर यूजर इनपुट है, एक बटन है. ओके, उसको क्लिक करना है. सो नाउ ये मेरा यूजर इनपुट का बॉक्स है, यहाँ बटन है. मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका आंसर कहाँ तो दिखेगा ना मुझे. दैट आंसर विल बी विजिबल एट सम प्लेस. सो वो जो सम प्लेस है, आई नीड टू डिफाइन दैट लोकेशन. ओके, तो वो जहाँ पर मुझे वेदर नजर आने वाला है, सो आई एम गोइंग टू मेक वन वेदर सेक्शन फॉर इट. सो आई विल जस्ट बी ओवर हियर. What I will be doing, I'm going to click make a new class. ठीक है, आफ्टर माई यूजर इनपुट ना, उसके बाद जाके मैं एक नया क्लास बनाता हूँ. सो लेट मी मेक वन न्यू क्लास डिवीजन टैग. एक क्लास का नाम दे देता हूँ मैं वेदर सेक्शन. सो जस्ट गो ओवर हियर वेदर. गलती कर रहा हूँ, आई नीड टू मेंशन ए क्लास ना. पहले लिखना पड़ेगा क्लास टैग देन वेदर सेक्शन. ओके, तो आपका ये वेदर सेक्शन हो गया. देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी डूइंग. तो वेदर सेक्शन में हम लोग क्या चाहिए. सो आई नीड दैट वेदर सेक्शन में एक लोकेशन दिखाना चाहिए, ये लास्ट अपडेट दिखाना चाहिए, करंट टेम्परेचर दिखाना चाहिए. आइकन लास्ट अपडेट आई डोंट थिंक मुझे जरूरत है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक वन S3. ओके, अब इसको मैं आईडी देता हूँ. सो आई विल गो इन द ओपनिंग टैग ऑफ S3. हेडिंग टैग जो होती है आईडी टैग, ये आईडी का नाम दे देता हूँ मैं लोकेशन. व्हाट शुड बी द नेम, लोकेशन. फाइन, लेट मी मेक वन मोर S3 टैग. अब इसके अंदर और एक आईडी बना देता हूँ मैं. आईडी, इसका नाम दे देता हूँ मैं करंट टेम्परेचर. लेट अस हैव अ करंट टेम्परेचर. करंट temperature. I'll just write TEMP as a short form. Okay, I need an icon as well. So S3 टैग S3 की आईडी और एक बना देता हूँ मैं आईडी, और इसका नाम क्या देता हूँ मैं आइकन. ओके, एंड द लास्ट थिंग, कैसा वेदर है. इज इट ह्यूमिड, इज इट रेनी, is it having mist. So we will making one more S3 टैग. इसकी आईडी दे देता हूँ मैं टैग करंट वेदर. करंट, गॉट दिस मच. फाइन. नाउ इतना पार्ट हमारा हो गया ना, तो यहाँ पर सारी चीजें आएगी. बट ये तो मैंने सिर्फ अभी ये बनाया. वेदर सेक्शन में क्या क्या है, लेकिन वेदर सेक्शन दिखेगा कैसा, दैट नीड टू बी डिफाइंड इन व्हाट स्टाइल. अंडरस्टूड. This is only a weather section, but how the weather section would be visible, that will come under the style section. So let us go in style section. ये हमने अपने आप से बनाया था. So let us put a dot and write the name of that section class, weather section. Okay.
देन कर्ली ब्रैकेट, देन एंटर। अभी आप क्या करोगे, लेट अस डिफाइन द हाइट ऑफ दिस। तो पहला काम, लेट अस गो फॉर अ विड्थ, width, width। लेट मी मेंशन इट अराउंड, ये आपके ऊपर है 40%। नहीं, विड्थ आने के बाद मुझे कुछ हाइट तो चाहिए समथिंग, सो दैट इट विल बी विजिबल, सो आई जस्ट मेंशन हाइट। ज्यादा डेटा तो नहीं है, सो आई जस्ट मेंशन 30%। लेट मी सी कुछ मुझे विजिबल हो रहे क्या वहां पर। आई थिंक हमने कलर को डिफाइन नहीं किया ना, लेट अस पुट सम बैकग्राउंड कलर एंड चेक। क्योंकि विड्थ और हाइट तो है, बट दिखने में कुछ कलर चाहिए ना, बैकग्राउंड कलर। यू कैन हैव इमेज एज वेल, ओके, as you, let us see now. Now you can see I have something over here, है ना, दिस वाला पार्ट। तो ये जिसकी विड्थ है, हाइट है और एक कलर है, ओके। इसको ही मार्जिन ऑटो दे देता हूँ, सो दैट इफ यू रिमेम्बर मार्जिन ऑटो देने के लास्ट टाइम पे आई वाज एबल टू गेट अ प्रॉपर डिस्टेंस। लेट मी रीलोड, परफेक्ट जा रहा है। एंड व्हाट एल्स, पैडिंग चाहिए तो पैडिंग दे दो, गिव पैडिंग, padding, okay, so the padding would be 20 pixel, 30 pixel, 20 pixel। actually मैं ऐसे भी नहीं, I'll just put it over here so it will understand this 20 30 20 30 automatically, so I will not do that। so let me just check this, without padding it was looking good, I think, है ना, there was a gap over there, so I will not add a padding to this, padding, fine। let us see this now, ठीक है, fine। so now let us go back to our HTML वाला पार्ट। ओके, नाउ यहाँ पर मुझे सारी चीजें चाहिए, है ना। तो अगर मैं अभी index.html पे इसके बीच में कुछ वैल्यूज डालता हूँ जस्ट फॉर टाइम पास, जैसे कि लोकेशन में मेंशन कर दो, या एक्चुअली नहीं, हम लोग अपने आप से डाल रहे हैं मुंबई, करंट टेम्परेचर समझो 42 डिग्री सेल्सियस, आइकन तो अभी पता नहीं, करंट वेदर है हॉट, ओके। सो लेट अस सी विल इट बी विजिबल ओवर हियर। नाउ यू आर डूइंग गुड गाइस, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, मुंबई 42 हॉट ऑल दिस स्टफ, करेक्ट। अभी क्या करें, तो ये आएगा, बट हम लोग को चाहिए, ये हमने डाली है ना, इट शुड नॉट, इट शुड कम ऑटोमेटिकली, सो आई जस्ट डिलीट ऑल दिस थिंग अगर समझने के लिए, सो जस्ट रिमूव दिस, वी नीड टू हैव इट विद सम अदर थिंग। अभी यहाँ तक हमने बेसिक क्या कर दिया, वी मेड वन HTML, वी मेड CSS पार्ट, यहाँ तक CSS। अब इसके बाद जो काम होने वाला है वो किसका काम होने वाला है, जावास्क्रिप्ट का, ओके, फाइन। सो जावास्क्रिप्ट पार्ट कहाँ आएगा, we at the end you can see a closing body tag, before that you are going to create a function, okay। तो आप एक फंक्शन बनाते हो, फंक्शन का नाम देते हो स्क्रिप्ट टैग, ओके। स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक फंक्शन का नाम देना है, तो लेट मी सी द फंक्शन नेम, फंक्शन। तो ये तरीका है लिखने का, whenever you want to write a function you need to mention a function, then you write a function name। ये फंक्शन का नाम का क्या देना है हम लोगों को, get weather data, get weather data, ओके। उसके बाद राउंड ब्रैकेट, तो दिस इज द वे यू नीड टू डू, ये एक रूल से समझ जाओ, व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन, राइट द नेम ऑफ फंक्शन, राउंड ब्रैकेट, तो ये फंक्शन का नाम हो गया। देन आफ्टर दैट यू नीड टू हैव अ कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा, वॉट एवर दिस फंक्शन नीड टू डू, the function can do most of the complex thing as well as simple thing like adding, subtract, multiplying, that can be also done, as well as fetching information from the other server, that can also be done, and difficult tasks
कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, तो जो करली ब्रैकेट में फंक्शन क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू कम। ओके, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई एम गोइंग टू राइट वन वेरिएबल। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं ना मैथमेटिक्स में, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, एंड इट इज गोइंग टू हैव सम वैल्यू। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया। लेट अस गिव द नेम एज अ करंट। तो वेरिएबल का नाम क्या डाल दिया मैंने, करंट। नॉट करंट, लेट मी गो बैक, लेट अस गो विद सिटी नेम, वेरिएबल सिटी नेम। ओके, इज इक्वल टू, अब मुझे चेक करना है क्या कि ये मुझे प्रॉपर डाटा दे सकते हैं कि नहीं। So what I will be doing, variable city name is equal to document dot get element। यहाँ दिख रही है डायरेक्ट आ गया है, document dot get element by id चाहिए मुझे, by id। ओके, तो जनरली क्या हो रहा है, मैंने एक सिटी नेम बनाया। अब मुझे उसका जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में से वहां पर जो आईडी है, वो अगर आईडी डालता हूँ तो उधर पे जो नेम है मुझे वो वैल्यू चाहिए। सो सिटी नेम के लिए मैंने कौन सी आईडी बनाया हूँ, सिटी नेम, करेक्ट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई एम गोइंग टू पुट इन अ ब्रैकेट, यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ मैं सिटी नेम, दैट इज माय आईडी ना, करेक्ट। इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डॉट वैल्यू। अब व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, मैंने इसको क्या बोला हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक सिटी नेम का मैंने वेरिएबल बनाया, ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन का काम क्या है, ये जो भी आईडी है उसकी वैल्यू जो डालोगे वो मिलना चाहिए। मतलब आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू ओवर हियर, यहाँ पर जो भी आईडी है, जो भी नाम डाल रहे हो, ओके, हमने इसका एक क्लास का नाम बना के था, आईडी बना के था, क्या नाम था, सिटी नेम। सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, दैट वैल्यू आई शुड गेट, आई शुड ऑब्टेन। ओके, तो मैं एक बार कंसोल में चेक कर लेता हूँ इसको। फाइन, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई एम गोइंग टू जस्ट चेक दैट थिंग इन अ फंक्शन कंसोल। मेंशन करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट, क्या चाहिए ब्रैकेट के अंदर मेरे को, सिटी नेम, है ना, ये वेरिएबल जो बनाया मैंने वो, कंसोल के अंदर मुझे सिटी नेम। फाइन, सो लेट अस चेक दिस। मैं मेरे इसमें जाता हूँ, कंसोल कहाँ होता है, आई जस्ट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट क्लिक करना है। देन व्हाट हैपेंड ना, ओवर हियर आपको दिख रही है यहाँ पर कंसोल प्रॉपर्टी है। अब आप सोच सकते हो मेरा लेफ्ट में आपका अलग है, इस ऑल कैन यू सी थ्री डॉट ओवर हियर। आप जब यहाँ क्लिक करते हो ना, शो वेयर यू वांट दिस इंस्पेक्ट थिंग टू बी देयर, अगर आप राइट पे करते हो इट विल बी इन राइट, अगर आप यहाँ करते हो इट विल बी एट बॉटम, इफ यू आर डूइंग एट एनी प्लेस, सो यू कैन जस्ट चेक दिस एंड विल बी एबल टू गेट। ओके, आई विल जस्ट पुट इट बॉटम में भी अच्छा लग रहा है। आई विल गो इन अ कंसोल, आई विल पुट सम नेम ओवर, जैसे मैंने मुंबई डाला, क्लिक किया, नहीं आया आंसर, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो लेट अस फिक्स दैट प्रॉब्लम। तो ये फंक्शन तो मुझे मिल रहे हैं, ओके, बट मुझे यहाँ मेंशन करना है कभी मिलने वाला फंक्शन मुझे। लेट अस गो बैक ऑन द टॉप, सिटी नेम, ये मुझे कब मिलना चाहिए, बटन ऑन क्लिक। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने बताया नहीं ऑन क्लिक पे मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ऑन क्लिक पे मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए, गेट वेदर डाटा। ये तो स्पेलिंग मिस्टेक किया था, अच्छा देख लिया मैंने, DATA। So I will bring the same thing over here, get weather data। Okay, अभी एक बार फिर ट्राई करते हैं। So I'm writing something over here, search, save कर होगा, Germany, search, still not happening, what could be the issue, sort out करते हैं। This round bracket can you see, वो मिस किया ना मैंने। So in the coding you cannot miss anything। ठीक है, चलो let's try our luck once again। फिर से एक बार इसको पेज पे रीलोड कर देता हूँ, just type Mumbai, search, now finally that means my coding is perfect up till now, है ना, यहाँ मुंबई नजर आ गया। So we are doing great now। Okay, अभी ये तो हो गया, मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट I understand properly, but I need some other JavaScript function as well to get the temperature, all this thing।
So for this what we'll be doing, we'll be going for a weather API. अभी weather API में कैसा होने वाला है, we are going to fetch API. We're going to get all this information of all the cities of the world from a weather API. लेकिन क्या होता है इसके अंदर, आप तो डायरेक्टली यू कैन नॉट सेंड रिक्वेस्ट टू द वेदर एपीआई. Before that you need to have some client that is going to send your request to the weather API. Okay, तो समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली आप वेदर एपीआई में अपना रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो. आपको पहले कोई क्लाइंट चाहिए जो आपको हेल्प करेगा आपकी रिक्वेस्ट भेजने के लिए. तो फॉर तो एक ऐसा एक क्लाइंट है Axios CDN. So I will go over here, Axios CDN. ठीक है, so I'll just click over here in Axios CDN library. आपके सेकंड वाला लिया मैंने, कॉपी यूआरएल. फाइन, ये यूआरएल को आप कॉपी कर लेना. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी डूइंग, इसको. So what this thing is, it is the thing which is going to send our request to weather API. तो हम लोग इसे क्या करते हैं, where we are having this link ना, after the link I'm going to just write script. Okay, script source. अब इस स्क्रिप्ट कोर्स में ये लिंक हम लोग शेयर कर देते हैं. ओके, सो जस्ट शेयर दिस स्क्रिप्ट लिंक, सॉरी आई जस्ट शेयर दिस लिंक ओवर हियर. तो मैंने ये लिंक यहाँ पर पेश कर दिया. तो ये लिंक हमारा क्या काम का है, टू सेंड अवर रिक्वेस्ट टू वेदर एपीआई. क्लियर विद दिस थिंग. अभी जाएंगे हम लोग एक्चुअल वेदर एपीआई में. फाइन, सो आफ्टर दिस आई जस्ट क्लोज दिस, इसका काम हो गया है. गो टू वेदर एपीआई. It was free weather API. Let me just check the free weather API. Free weather API. अब इसके अंदर आप जाओगे किसमें, दिस फ्री वाला पार्ट, हाँ, फ्री वेदर एपीआई. क्लिक ऑन इट. When you come over here for the first time, what you need to do, you need to do the sign up part. So you have to just click on a sign up. आपने sign up पे क्लिक किया. What it is asking you right now, आपका ईमेल, आपने ईमेल टाइप कर दिया. और क्या पूछ रहे, इट इज आस्किंग अ पासवर्ड. ये नया पासवर्ड है, आप अपने कोई अकाउंट का पासवर्ड मत डाल देना. ओके, दिस इज अ न्यू पासवर्ड यू आर क्रिएटिंग फॉर दिस वेदर एपीआई. रीटाइप द पासवर्ड. आप रॉबर्ट हो नहीं ना, तो मेंशन करो आई एम नॉट अ रॉबर्ट, आई हैव एग्रीड. देन क्लिक ऑन अ साइन अप. आफ्टर यू साइन अप, it might ask you to verify your email or something like that. अगर वो नहीं पूछा, that's good. And after that we are going to do the login part. लॉगिन पार्ट में आपको क्या डालना है, आपका जो ईमेल आईडी में आपने अपना यूजर नेम बनाया था वो, दैट वुड बी योर ईमेल. और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया वो, देन जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन. So just click on login. Take times. Oh, sorry for the song. Okay, over here. Now you got one key over here. क्या की है यहाँ पर? This is your API key. I'll just click on this. Copy होना चाहिए. It is right now it's not copied. Click. Can you see copied written? Perfect. After that, where you will be going? API Explorer. आप कहाँ जाओगे? API Explorer में जाओगे. कोई एडवर्टाइज आ जाएगा. Just close that advertise. ठीक है? अभी आपने वो एडवर्टाइज क्लोज कर दिया. Then after that, you have to click on API Explorer. यहाँ पर चले गए. Now you are having something like this. Your API key. चल पहले यहाँ डाल देता हूँ. Control V. I pasted my API key over here. Correct? I'll just scroll down. जब मैं यहाँ स्क्रॉल करता हूँ, you can see I'm getting something called as forecast, current. तो मैं forecast में जाता हूँ. Now it is telling me the parameter. हम लोग की ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है? It is showing for the London. यहाँ पर अगर मैं कुछ कंट्री चेंज करता हूँ तो इट इज गोइंग टू शो मी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. तो मैं जब फिलहाल तो लंदन में लंदन रहने दो. इफ यू वांट टू हैव इन डिटेल एयर क्वालिटी अलर्ट्स, यू कैन जस्ट क्लिक देम यस यस. अगर नहीं तो जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन शो रिस्पांस. आई विल बी गोइंग डायरेक्टली टू शो रिस्पांस. इफ आई क्लिक ऑन शो रिस्पांस, अब मेरे पास एक चीज आई है, कॉल. सो दिस इज गोइंग टू गिव अ कॉल टू द वेदर एपीआई. ओके,
और ये सारी जो इंफॉर्मेशन नीचे है, बिग चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज इट इन योर वेदर एपीआई. जस्ट फॉर एग्जांपल आई माइट शो यू few things. जैसे कि इट इज गोइंग टू शो मी द लोकेशन. यहाँ दिख रहा है आपको लोकेशन का इंफॉर्मेशन है. नेम क्या बता रहे हो? लंदन. ओके. सिमिलरली यहाँ पर कौन सा इंफॉर्मेशन है? करंट. करंट में मुझे क्या क्या दिख रहा है? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना है? 10. टेम्परेचर फ़ारेनहाइट कितना है? 50. कंडीशन कैसी है? सनी. आइकन. ओके. विंड स्पीड. तो वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी कैन टेक फ्रॉम इट, वी कैन टेक इट. जैसे कि फोरकास्ट में बता रहे हैं, इट इज हैविंग दैट maximum temperature, all this thing. So we are not going to take all this information, but I'm going to fetch few of this. ठीक है. So just remember आपके पास दो चीजें, location, current. I'm going to take the information from these two parts, a location and a current. Okay. तो अब कैसे करेंगे इसको? Let's start. अभी this console.log city name की मुझे फिलहाल तो जरूरत नहीं है. So what I will be doing, I'll just removing this part. Okay. Now I'll just click over here, put a semicolon. अभी हमने ये एक्सियोस का था हमारा फंक्शन, तो हम लोग को एक्सियोस को बताना पड़ेगा भाई हमको क्या चाहिए. सो आई एम जस्ट मेंशनिंग एक्सियोस डॉट गेट. एक्सियोस गेट दिस ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाद इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज. अभी कॉल आपने कॉपी किया था ना, कंट्रोल वी कर दो. नॉट दिस वन, वी नीड टू कॉपी द कॉल वन. तो जो हमको कॉल में लिंक आई है, कैन यू सी दिस कॉल लिंक? अगर आप इसको गौर से देखो ना, इट इज हैविंग ऑल दिस थिंग. ये आपकी की है. ओके. यहाँ पर आपका क्या है? सिटी नेम है एंड अलर्ट्स है. फाइन. So I'll just put it over here. I'll double click on this. Control C. I'm going to put it over here. Control V. अगर आपको ऐसा रेड का एरर लग रहा है ना, sometime because it is not in a single line, it might give you error. So just click over here and do a backspace so that everything be on a single line. समझा ये? अभी access dot get कर दिया. ये get होने के बाद हमको रिस्पॉन्स चाहिए. क्या रिस्पॉन्स चाहिए? We need to check that. तो यहाँ क्लिक करता हूँ मैं. Dot then. Okay. If I do a dot then, दिस पार्ट इज लिटिल क्रिटिकल. क्रिटिकल इन द सेंस कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग. एक ब्रैकेट डाल दो, देन पुट वन मोर ब्रैकेट इनसाइड. ये जो ब्रैकेट है उसमें डालो रिस्पॉन्स. वी नीड टू रिस्पॉन्स, गेट अ रिस्पॉन्स. ओके. अब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है, उसके बाद आप डाल दोगे इक्वल. ये तरीका है, वाई इक्वल और दिस थिंग, ये तरीका है. दैट इज द वे टू गेट अ रिस्पॉन्स. ग्रेटर साइन, देन अ कर्ली ब्रैकेट. The whole point of doing mistake is over here only. यहीं पे सब चीजें मिस्टेक्स होती हैं. एंड जस्ट एंटर. अब मैं कंसोल में एक बार चेक करता हूँ वो डाटा मुझे सेंड कर रहे कि नहीं. तो आई विल डू अ कंसोल डॉट लॉग. ओके. ब्रैकेट. ब्रैकेट में रिस्पॉन्स. तो समझ में है ना, कंसोल डॉट लॉग क्या करता है? वो कंसोल के अंदर बताता है. ओके. यू नो वेयर इज द लोकेशन ऑफ अ कंसोल. अब वहां से हमको रिस्पॉन्स मिला क्या नहीं, तो नीड टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स. हम लोग गेट करते हैं. Get information in the sense, get the information from the server. When the server send you information, that is a response from the server. तो response करते हम लोग, response dot data. उसका data. ओके. हम लोग एक बार चेक कर लो मैं इसको. I will need to check that in a console part. So I will just open a console, inspect, go in a console, search for any of the country. यार मुझे लंदन. search, showing London. London. मुझे information चाहिए. Need to have that information. So why it is not showing me the information?
console.log मिसिंग समथिंग, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है? इट शुड हैव गिवन मी द इंफॉर्मेशन। एपीआई कीज को एक्टिवेट होने टाइम लगते हैं क्या? लेट मी चेक। So I'm having response console. Can you see over here spelling of console? Okay, एक मिस्टेक भी नहीं चलेगी। So let me just check once again. Search. कभी आप रीलोड करके देख लिया करो। Now can you see when I click on a search, आपको दिख रहा है यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगी। लोकेशन में करंट, फोरकास्ट, लोकेशन। करेक्ट, मेरे लिए करंट और लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इससे मुझे नेम पता चलेगा। करंट में मुझे टेम्परेचर पता चलेगा। गॉट इट। और करंट वेदर के लिए इज इट समवेयर वेदर, हाउ इज द वेदर, फोरकास्ट में देखूं मैं, could be somewhere, just need to check that what kind of weather is right now. Okay, because all these things इसके arrays भी forecast में type object, fine, don't get so much deeper inside this, तो confuse हो जाओगे, but it's working. When I'm clicking on any of the country, I'm getting that what, location, current, forecast. Mistakes होंगी, you might do some error, you might forgot a semicolon, you might have written some spelling mistake, जल्दी भी नहीं मिल पाती mistake. It is a very challenging thing to find the mistake. Okay, but have patience, धीरे धीरे करो, चीजें easy हो जाएगी. Okay, now let us move it. तो हमको यहाँ से तो हमारा डेटा आ रहा है, अब मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, मैं एक दो वेरिएबल और बना लेता हूँ। Okay, so just for example, when I was clicking on a search वाला part ना, so going to console once again, तो मैं सर्च कर रहा था, तो मेरे पास दो चीजें, लोकेशन और करंट। तो मैं क्या करता हूँ कि लोकेशन और करंट का एक वेरिएबल बना देता हूँ, बिकॉज वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस करंट एंड लोकेशन। सो लेट मी मेक टू मोर वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा वेरिएबल चाहिए मुझे? करंट इक्वल टू रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या? रिस्पॉन्स चाहिए, काय का रिस्पॉन्स चाहिए? डॉट डेटा। किसमें से रिस्पॉन्स चाहिए? करंट वैल्यू में से। सो हैव अ लुक, जो यहाँ पर जो करंट वैल्यू है उसका रिस्पॉन्स चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन डॉट करंट करके, फाइन। वन मोर थिंग, लेट अस मेक वन मोर वेरिएबल। वेरिएबल लोकेशन इज इक्वल टू, अभी तुम लोग बताओ मुझे क्या चाहिए? रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, अभी लोकेशन किस में से आ रहा है? इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, लोकेशन के लिए एक अलग चीज है ना, तो जो रिस्पॉन्स जो डेटा मिल रहा है हम लोग को, उसमें से हम लोग कहाँ जाने? करंट में नहीं जाना, वेयर डू वी नीड टू गो? इन द लोकेशन। सो वी आर गोइंग टू पुट इट वेयर? लोकेशन। गॉट दिस? फाइन, ये हो गया। अभी ये सारे जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हमको कहाँ चाहिए? इट शुड बी ओवर हियर S3 के अंदर, जहाँ लोकेशन लिखा है S3 के बीच में। इधर पे चाहिए करंट टेम्परेचर क्या है, इधर पे चाहिए कौन सा आइकन लगाना है, इधर पे चाहिए करंट वेदर क्या है ना। तो इन सब की आईडी क्या है? आईडी लोकेशन, आईडी करंट टेम्परेचर, आईडी आइकन, वी आर गोइंग टू यूज दैट। तो इस तरीका कैसा होगा? वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर डालनी है, वी ऑलवेज यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन, मेंशन कर दूंगा मैं डॉक्यूमेंट, डाल दिया मैंने, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, कौन सी आईडी है? पहली वाली, जहाँ S3 का, मुझे लोकेशन के लिए लोकेशन की आईडी, तो आई जस्ट गो इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू मेंशन लोकेशन। तो जहाँ लोकेशन की आईडी थी, तो लोकेशन आईडी इज ओवर हियर। ओके, उसके बाद में आपको प्रॉपर्टी डालनी डॉट इनर HTML, डॉट इनर HTML। ओके, ये प्रॉपर्टी है उसकी, और इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्मॉल कैपिटल है HTML। ओके, डॉट इनर HTML। तो
गेट एन एलिमेंट बाय आईडी लोकेशन डॉट इनर html, क्या होगा ये, इज इक्वल टू, अगर आप ये प्रॉपर्टी में देखो, if you have a look at this property location, लोकेशन, लोकेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, मुझे नाम मिल रहा है नेम में, करेक्ट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, लोकेशन, यहाँ लिख दूंगा मैं लोकेशन के अंदर, तो लोकेशन के अंदर से लोकेशन डॉट, ओके, नेम, फाइन, राउंड ब्रैकेट। नाउ लेट मी हैव अ लुक, अगर मैं यहाँ डालता हूँ जर्मनी, जस्ट रीलोड दिस, जर्मनी, तो लोकेशन के अंदर क्या मिला, लंदन। अब ये कंफ्यूज मत होना यार, यहाँ जर्मनी लिखे लंदन, आई विल जस्ट कम टू दैट इन द एंड, लेकिन मुझे लोकेशन मिल गया मेरा, है ना, एक लोकेशन आ गया, फाइन। सिमिलरली लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट, इसके बाद वाला कौन सा मेरा था, आईडी करंट टेम्परेचर, so I'm just going to mention current temperature, fine, current temperature, तरीका वही डॉट inner html, inner html is equal to, मुझे करंट टेम्परेचर मेरा कहाँ पर है, यू नीड टू चेक दैट ना, मैं लिखूंगा यहाँ पर, if I check my current temperature, so can you see current temperature is where, the temperature is over here, तो करंट टेम्परेचर के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर, टेम्परेचर अंडरस्कोर सी, ओके। सो जिसके अंदर जाना है मुझे, तो इसको मुझे करंट में जाना है, करंट डॉट टेम्परेचर, कैसा था वो, अंडरस्कोर सी, फाइन। सो लेट मी गो इट विथ हियर वंस अगेन, मैं लंदन ही लिखता हूँ, so आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, आई गॉट इट 12, लेकिन इसके बाद में डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वो डिग्री सेल्सियस तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग ये अपने आप से लाते हैं, जस्ट मेंशन प्लस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो सिंबल डाल देते हैं, so let me go for a degree celsius symbol, okay, I just found it, control C, I'm going to put it over here, control V, अगर अभी देखूं तो मैं कैसा होगा ये, आगे डिग्री सेल्सियस, चलो वी आर डूइंग गुड, फाइन। ना उसके बाद मैंने क्या लिया था, आइकन, so I'll go with that once again, document dot get element by id, ओके। अब कौन सी आईडी आ रही है यहाँ पर, आइकन, ओके, गॉट वन आइकन, तरीका वही है, डॉट इनर html, मिस्टेक से मेरी, डॉट इनर html इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, जैसे कि आइकन के लिए आपको है ना, look, go over here, location, current में मैं चेक करूँ इसका, just a minute, icon, so where can I see the icon वाला part, तो मुझे नजर नहीं आ रहा, just go to that actual thing, okay, so where was I, हाँ, I was searching for the icon वाला part, show you,
यहाँ दिख रहा है आपको icon, all this thing, but ये icon different है. So for bringing this icon to mine, I'm using some different technique. Okay. So what I will be doing, have a look. यहाँ पर जाना है आपको. I need to place, I don't know what is the name of this icon, but on the left hand side, on above the tab button or next to the, before your one on a number key, there's one icon is similar to this. Okay. तो एक icon आपको type करना है. Then this sign. Then you type img. Then उसके बाद आपको क्या दबाना है? src is equal to, then dollar sign. This is the method for bringing that. ये होगी तो आपको वहां पर इमेज लानी है. Then you are going to mention bracket current. इसके अंदर कंडीशन में देखना है वो current. So it is in the current. In current it is where condition. Current condition dot icon. तो इमेज लाने का तरीका ऐसा होगा आपका. इमेज सोर्स current condition dot icon. Fine. And it should be in a curly bracket. Sorry, I just took this bracket. It should be a curly bracket. Okay. So I'll just go for it over here and I'm going to put it a curly bracket. And after that, this one once again, and that same sign. Okay. Next, above the tab button, find it. Now let me just check this. जो भी current condition होगी उसका icon आ जाएगा. So we have just put an image source. Okay. So this image source will be related to which one? The current condition icon. Okay. I will just check this over here. So if I just go over here and check this location, current के अंदर क्या था? Condition के अंदर icon है. Current dot condition dot icon. Okay. This is the image. But I cannot take directly one of the image. I need to get the image as per the condition. So that is the reason we have to change this code properly to we get the image. Fine. So let me just check how it is looking in my weather app right now. So just click on search. But the image is not coming. Let me go for Germany. इसकी size तो कम नहीं पड़ रही मेरी. Let me just check that. नहीं. Let us see क्या issue है. We'll sort it out. The condition should have come. I might have made some mistake or something like that. Let me just check this thing. Degree Celsius was semicolon. Okay. Not ठीक है. चल last part देखते हैं. Current weather. So same thing. Document dot get element by id. Okay. इसका क्या नाम था? Current weather. उसके बाद dot inner html. परफेक्ट. ये तरीका करे था ना हम लोग. is equal to current. Okay. तो current weather कहाँ पर है? Let us go and check the current weather over here. Where is my console? Let me just open my console. यहाँ पर आपने कोई भी कंट्री का नाम डाल. राइट में इज कमिंग एनी कंट्री. So the current condition कहाँ है? Let me just check current condition. So this is what is the condition over here right now? Sunny, no? So current dot condition. So we just need to go over there. Current dot condition. And anything else it has been given over there in that information. You can see what it is written. Text. So हमको ये text भी डालना होगा. Dot text to fetching this information. Okay. Now let us go to our weather app and check this thing. Let me just reload this file. Enter a city name Mumbai. Search. The image load नहीं हो रही. What could be the reason? Anonymous. Get weather data. Blah 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 blah. It should happen.
Let me see. There might be some mistake, slide mistake. Let me just check it properly. Image source imgsrc current dot condition dot icon curly bracket close. This thing done. All look good to me. I don't know what could be the reason for this. Icon dot inner html dollar sign. Okay, it should have been load. Let me just see this once again. Try it once again. Hmm, the image is not coming in. The image is there, but it's not visible to us. Could be some reason. देखते हैं. We'll just find out the reason. ठीक है, we'll try that. No worry. अभी इसके बाद एक और चीज, the name. Whenever we are typing anything, the name is coming as London. मैं यहाँ पर जर्मनी डाल रहा हूँ तो भी लंदन डाल रहा हूँ, मुंबई डाल रहा तो लंदन डाल रहा है. How can you resolve that? The last part. Okay. Can you see over here London? Because we are given it as a London. So यहाँ पे सब लंदन के बारे में आ रहा है. अब लंदन में यहाँ से हटा दो. Put the inverted commas. Then type of plus. हमने एक वेरिएबल बनाया, आईडी बनाया, सिटी नेम. Put that name. ci. एक मिनट. I will use single inverted comma. Then I am going to mention the ID city name, which is also a local variable as well. Then once again, अच्छा मुझे यहाँ plus डालना पड़ेगा before the city name. Okay, and after the city name as well, I need to have a plus. Then I need to have a single inverted comma. तो याद रखो, अब लंदन हटा दे रहे हो, single inverted comma डाल रहे हो, फिर plus डाल रहे हो, city name डाल रहे हो. Now let us check for other country as well. So if I just reload this, enter Germany, search. So Germany capital Berlin is showing me the temperature. Okay. Similarly, if I go for the other country like Mumbai, search, it's working. Only the thing which is not working right now is image. So just let me just go for the things. क्या मिक्स करेगा document dot get element. Simple कुछ मिस हो जाता तो भी it's create a problem for us. Icon, weather, image source, current condition dot icon, header. Image तो आ रही but it's not loading. What could be the reason? Dot condition dot text. मैं इसको टेक्स्ट चेंज करके देख लूँ. इनर डॉट टेक्स्ट. Let me just check this. कभी कभी हो जाता है. Let me just check this. Open it live server. Image source cdn dot weather dot 13.png. But why this is not loading? That is a concern to me. I think that all this thing console fail to develop the tools object. All look good over here. यहाँ क्या fail है object. Phone extension. It's not giving some proper reason for this. Cannot get favicon icon dot I. तो ये इसका सर्वर एरर है कुछ. I don't know what is the reason. लेकिन इतना मुझे पक्का मालूम है, इनर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए. यहाँ पर क्या आना चाहिए? इनर HTML. Okay. So let me just put it once again. Save it. Control S. नहीं sorry. मुझे लोड करना है वेब पेज. Germany.
finally got this, but you can have a look. सनी तो अब आपको बस थोड़ा सा अपने इस चीज पे काम करना है इसके CSS पार्ट पे तो जैसे कि where my weather section was there it was 40% I can make it 50% and check it okay text align center चाहिए क्या let us check that text align center पे देखें how it is going to look at things right now ठीक है ना नॉट गुड तो इसका साइज भी आप कम कर सकते हैं इट विल बी वेल सो नाउ वी आर हैविंग अ वर्किंग ऐप गॉट इट समझ में आया so you can just work on CSS part and it will look